topic, as you know, today is interprofessional education, and we will be covering different aspects of this topic. And please take it as a kind of informal discussion, and you can stop me anywhere where you think that you need some further clarification. Right. Now, let us start with some examples or some case studies. And the first case study, the communication across specialties in healthcare relies heavily on written reference. I think this is still the most common method that we refer patients from one specialty to another. And most of the time, we actually just refer. We don't know what the other specialty is going to do and how they are going to handle that patient, what kind of support would be available. So, or sometimes we can make a phone call, but point here is that we hardly know when I'm referring the patient, for example, to speech therapist, I hardly know anything that how they are going to manage this patient, and my input on that side would be almost zero. So as there's no dialogue, just simply a referral and giving some details of the patient. So this is what is called the fragmentation, because there is no link, there is no information, there is no sharing of expression, and this is what is called a multidisciplinary model of care, where different disciplines are involved in the care of a patient, but there is no communication between these two disciplines. Right. So this is one model, the fragmentation. That we are referring a patient and there is hardly any communication. The next is integration and collaboration. Here, the collaboration between physicians and other healthcare professionals is still superficial, but some integration is there. One example is that in some institutions, the pharmacists, they are invited to join the ward rounds and give their input about the medication being given to certain patients. And now, at least in the institutions I have worked here in Malaysia, the role of pharmacist has changed. It's not simply dispensing of the drugs. They provide medication counseling for patients. With the pharmacy, there are rooms where these are the consultation rooms, and where the patients who need some further counseling are invited, and the counseling is given by the pharmacist. So there is some degree of integration, at least between the pharmacy and the medical department. Their role, the pharmacist role has increased gradually, and since 2007, the pharmacists run a clinic which is called the Medication Therapy and Adherence Clinics, or MTAC, and in various specialized areas. So especially the chronic diseases where the medication is to be given for a long time, and the compliance may be an issue. So in those areas, these clinics, they
they play their role, such as diabetes, asthma, renal disease, anticoagulant therapy, or methadone. So these patients are helped by these pharmacists, and when they want to renew their prescription and take more, let's say, more medicine, they not necessarily come and see the physician. They may come directly to the pharmacy for fill up prescriptions, and they may be given counseling there. The major role of these clinics is to increase the adherence to the medication or better compliance, and that has helped the patients and the overall care of the patient. So this is a second example. The third example is interprofessional practice. And these are combined clinics where different specialists sit together. Those specialists who are involved in the management of that patient, and the patient is seen by a number of specialists in a single visit on the same day. So, and then these specialists may discuss with each other a combined management plan. So this is an example of interprofessional practice. So the hallmark of this is that a day of in a week or in a month is fixed, and where all the involved specialists are available, and patient has to come only once rather than going to each specialist on a separate day. And all these specialists can see that patient on a single day, and they can provide the treatment with discussion from each other. And in this way, the treatment might be changed to some extent based on the discussion among the specialists. So, and some specialized, for example, diabetic clinics in Malaysia are also jointly run by endocrinologists, dietitians, and nurse educators. So this is an example of interprofessional practice. So first is fragmentation, second is collaboration or integration, and third is interprofessional practice. So these are three different models of managing the patients, especially the patients who need care by multiple departments, multiple specialties. Here is now an example or another case study of interprofessional education. If medical students are studying with physiotherapy students, for example, in a lecture, the medical students think themselves to be superior than the physiotherapy students and initially look down upon them. However, when they learn together in a combined clinic, they gradually learn to work together and develop respect for each other. And this is the basic concept of interprofessional education, that bringing two or more professions together, and the students would are two disciplines together, and students would learn from each other and about each other, and a mutual respect and the importance of other departments would develop. And that is the very basic concept of interprofessional education, our topic today, which we will be going into the details. So interprofessional education, IPE, interprofessional education, helps develop tolerance, acceptance and respect and teamwork among the health professionals. That is the main impact of interprofessional education.
Let me share some example from the work. I thought nurse is my subordinate and she must follow each and everything I say. And I think that thinking may still be there. And some people do think, or some specialists or some medical officers think that the nursing staff is their subordinate and they are there to simply follow what the instructions are given. सर थॉट प्रोसेस को वैसे अगर चेंज कर लें तो हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो बड़ा सेफ हो जाती है when you give nurses the confidence कि अगर आपको हमारे किसी क्लिनिकल डिसीजन से एतराज होता है तो many a times they are able to actually point out a lag or a contradictory point जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को अल्टर भी कर सकती है. That's really important point. Really important point. And apart from that, madam, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ नर्सेज के पास होती है और आप तक नहीं पहुंचती. और अगर आपने नर्सेज को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, उनको कोलैबोरेशन है, तो वो आपको जो उनकी कम्युनिकेशन होती है पेशेंट्स के साथ, उनका बिहेवियर होता है, क्योंकि वो ज्यादा देर पेशेंट के साथ रहती हैं, तो दे कैन प्रोवाइड यू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एज वेल. It's really an important कि उनको हम as a partner deal करें rather than as subordinate. Another example, I shouted on laboratory technician, I want the report now. I didn't know how long it takes to process the specimen. क्योंकि मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है और बस I want the report, whereas obviously laboratory has to take its own time. Another example, physician decided that the radiographer must perform the procedure on this patient. Radiographer's opinion must be sought before making any such decisions. Another example, laboratory sent back the specimen with the comment, it's not labeled properly. As a physician, I was so angry. Interestingly, the pharmacy called me and told me that the dose of anti-epileptic drug is too high and I should be careful in prescribing these drugs. So these are four or five examples, but there would be many other in your own experience. And these are real issues and they may affect the care of the patient. And obviously we need to think about it. Right. Now, for improving the quality of healthcare, the quality of service delivery in health and social care depends upon an effective workforce. There's no doubt. We all know this, that the effective workforce can provide a better healthcare, and interprofessional education can bring about the changes needed for the development of such a workforce. Quality education that enables interprofessional learning in classroom and in practice is the key to efficient and effective workforce development. So, अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करें, तो IPE क्या कर रही है? Interprofessional education क्या कर रही है? It is enabling to develop a good workforce, and we know a good workforce and effective workforce can provide a better healthcare, and we can achieve better outcomes of our healthcare program. And again, as I said earlier, this is another basic concept or aim of interprofessional education. Right, so far what I have been trying to
who explain is learn together to work together. That is the sort of slogan for interprofessional education. Any one of you want to share your experience in the wards or in the hospital or in your practice, where you have seen some issues which could have been resolved if there was a better understanding between the team members? Any one of you can share the experience? Sir, for oncology cases, multidisciplinary team involvement is mandatory. जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं सीएस के, कैंसर्स के, उनके लिए जरूरी होता है कि सारे डिसिप्लिन को इन्वॉल्व किया जाए. तो फिर यहाँ एमडीटी होती है हमारे डिपार्टमेंट्स में ना, सही है. उन्हीं पेशेंट्स का. हाँ, डेफिनेटली ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है. अब कीमोथेरेपी है या मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट्स. अब कैंसर पेशेंट्स के बेशुमार मसाइल होते हैं. कुछ सोशल मसाइल हैं, कुछ फाइनेंशियल मसाइल हैं, कुछ एजुकेशनल हैं, कुछ कंप्लायंस हैं, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो ऑब्वियसली कोई एक स्पेशलिटी उसको हैंडल नहीं कर सकती. और स्पेशली जो कीमोथेरेपी के लिए आपको मेडिकेशन प्रिपेयर करना पड़ती है. और जब तक ये सब लोग जो उस पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, वो एक दूसरे का रोल नहीं जानते, तो दे कैन नॉट प्रोवाइड द ऑप्टिमम केयर टू दैट पेशेंट. और यही बात जो है वो इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन अचीव करना चाह रही है कि वो लोग जो इन सारे रिलेटेड डिसिप्लिन्स में काम करते हैं, उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग कि वो एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, सो दैट जब वो रियल प्रैक्टिस में जाएं तो वो एक बेहतर जो है केयर प्रोवाइड कर सके. आई होप द मैसेज इज क्लियर सो फार. राइट, एनी क्वेश्चंस? No, sir. Right. Okay. Now coming to this was basically the introduction. I really wanted you to come on board on this topic, interprofessional education. Once we are on the same page and we understand this, so that we can go further on this topic. सर, जो स्लोगन वैसे आपने डिस्प्ले किया हुआ था, दैट इज एन एक्सीलेंट मैसेज, लर्न टुगेदर टू वर्क टुगेदर. इसके दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. एक तो ये है कि जो ऑलरेडी जैसे हम लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, क्लिनिकल फील्ड में हैं और हम ट्रेडिशनल मॉडल के ग्रेजुएट्स हैं, तो हमारी स्टेज पे इट इज एन एक्टिव मैसेज कि वी शुड लर्न टू टेक ऑल द स्टेक होल्डर्स एज टीम. और बीइंग मेडिकल एजुकेशनिस्ट, इसका ये एक मैसेज आता है कि उनको हम जो हमारा टीचिंग मॉडल है उसी को हम इंटीग्रेट कर दें. हम जैसे आपने शुरू में भी एग्जांपल दी कि हम फिजियोथेरेपी वाले स्टूडेंट्स को एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स के साथ अगर एनाटमी वगैरह पढ़ाते हैं तो दे विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट ईच अदर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग एज टीम्स. जब हम उनके ही छोटे छोटे जिस तरह पीबीएल्स के लिए टीम्स बनाते हैं, तो दे विल लर्न राइट फ्रॉम द बिगनिंग. Right. मैडम, इसमें एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन. इसमें जो है आपने, एक तो है उनको पढ़ाना टुगेदर, कि एक ही क्लास पर तो एनाटमी की क्लास है, दोनों इकट्ठे ले रहे हैं, और एक है उन दोनों ग्रुप्स का वर्किंग टुगेदर. अगर तो पहली सिचुएशन है कि सिर्फ उनकी क्लासेस, थ्योरी की क्लासेस इकट्ठी हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं है. वो इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन की बजाय उसको हम मल्टी प्रोफेशनल एजुकेशन कहेंगे. लेकिन जो दूसरी बात आपने की कि ना सिर्फ वो क्लास में इकट्ठे हैं, बल्कि उसके बाद लेट्स से मेडिकल स्टूडेंट्स वहां जाते हैं जहां फिजियोथेरेपी हो रही है, और फिजियोथेरेपी वार्ड
के स्टूडेंट्स वार्ड में आते हैं, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और साथ वो भी अपने जो है इनपुट उसमें लेते हैं और देते हैं. That would be the real interprofessional education. We will talk about it. Right now, what are the learning outcomes we want to achieve in this session? First is the participants, all of us, should be able to explain the concept, interprofessional education and interprofessional practice. So we should really understand that and be able to explain different models of interprofessional education. I'll show you some examples in different countries में, different situations में कौन से models जो हैं interprofessional education के implement हो रहे हैं, and then you can see your own situation and the most appropriate model, and then you can modify according to your own situation. And then develop IPE curriculum for undergraduate medical students. So जब ये पहले दो concepts आ जाएंगे, then you will be able to contribute in the development of a curriculum which encourages interprofessional education. क्योंकि जब हम इन students को इकट्ठा करेंगे, तो we would need to make some changes in our curriculum, in our timetable, etc. Right, or next plan the implementation of IPE curriculum for undergraduate medical students. So जब हम उन 3 stages से गुजर जाएंगे, तो इंशाल्लाह you will be able to implement the IPE curriculum in your own institution. Right. Now, to introduce this topic, I have chosen 3 statements. The first, IPE occurs when students from 2 or more professions learn about, from, and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes. अब इसमें आप देखें तो पहले तो ये है कि it involves 2 or more disciplines or specialties or subjects, and then students learn about, from each other, about each other, and with each other. और aim क्या है? To enable effective collaboration and improve health outcomes. तो ये 3 components हैं इसमें: 2 or more professions learning about, from, and with each other, with the aim to improve the patient care. ये एक statement है to introduce interprofessional education. Another statement: the goal of interprofessional education is to prepare health professionals with the knowledge, skills, attitudes necessary for interprofessional practice. So, इसमें IPE is going to lead to IPP. Interprofessional education ultimately will produce interprofessional practice. जब ये students graduate कर जाएंगे और जब वो अपनी practice करेंगे, so based on their training as an IPE student, they would establish a clinical practice which would be interprofessional. वो उसमें fragmentation नहीं होगी, उसमें consultation होगी, उसमें एक दूसरे के views को respect किया जाएगा. And third statement, the IPP results in the collaborative and comprehensive care that patients value and expect, and it is the result of IP teamwork. So interprofessional education, say interprofessional practice or interprofessional practice will definitely improve
the health care patient care, or with the collaboration and with each other. So these, I think, I chose these three statements which very clearly explain the concept and the purpose and the working of interprofessional education. Now, इसको further समझने के लिए, let's look at the different जो educational continuum है. ये uni professional है, multi professional है, and interprofessional है. These three examples. Uni professional education is जो exactly हम most of the institution इस वक्त कर रहे हैं. Students are all from the same discipline or profession. जिस तरह सारे MBBS के student हैं, और the aim क्या है? The mastery of a specific body of knowledge, types of skills and modes of conduct are emphasized. So सिर्फ एक profession है और उसी पे ही सारा emphasis है. दूसरे जो professions हैं, health related professions हैं, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है. The second is multi-professional education. यहाँ पे मैडम मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि हमें differentiate करना होगा multi-professional education में और interprofessional education में. इस पे हम थोड़ा सा discuss करेंगे. इसमें ये है कि various disciplines with different perspectives are brought together to understand a particular problem or experience. For example, anatomy of head and neck taught in one lecture to both medical and dental students. We at least in Malaysia, this is quite common. जिन universities में ये medical schools हैं और dental schools हैं, तो वो कुछ sessions जो हैं together teaching together. जिस तरह anatomy में head and neck है, तो medical students भी हैं और dental students भी. लेकिन वो सिर्फ इस क्लास को अटेंड करने की हद तक हैं. उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. वो कोई उसमें एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि हेड एंड नेक की एनाटॉमी जो है वो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, तो वो आके इसको अटेंड कर लेते हैं. इससे ज्यादा नहीं. तो ये जो है ये इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, इसको हम मल्टी प्रोफेशनल एजुकेशन कहेंगे, क्योंकि इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन इससे ज्यादा है. ऑल्दो ये पार्ट बन जाएगा इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन का, लेकिन ये सारी इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है. उसके बाद IPE is not shared learning. Students from different professions learn together in a classroom setting is not IPE. Shared listening alone does not lead to IP learning. Or shared teaching, students from different professions sitting side by side in lectures. Whereas IP is a planned learning that takes place when students from different disciplines work together. Workplace learning. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि IPE में सिर्फ क्लासरूम में एक साथ बैठ के एक लेक्चर अटेंड कर लेना does not really fulfill the purpose, बल्कि इसको इससे आगे जाके जो वर्क प्लेस है, जो जिस तरह हमारे आप ये कह लें डेंटल क्लिनिक्स हैं और हमारे आउट पेशेंट्स हैं और हमारे वार्ड्स हैं, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट जो जरूरी है to achieve the real essence of IPE. वो workplace एक ऐसी जगह है जहाँ when students would learn कि वो कैसे contribute कर सकते हैं, medical specialties कैसे contribute कर सकती हैं और dental specialties कैसे contribute कर सकती हैं, वो कैसे सोचते हैं इस situation में, और medicine वाले कैसे सोचते हैं इस situation. Right.
So that is differentiating the IPE from uni-professional and multi-professional education. Going further on that, interprofessional education, students from various professions learn together as a team. This collaborative interaction is characterized by the integration and modification of different professions' contributions in the light of input from other professions. ये एक बहुत important statement है. जब ये students एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके क्लासेस के अलावा वर्क प्लेस में, तो उनके जो ओपिनियंस हैं उनमें मॉडिफिकेशन आती है. अगर डेंटल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स इकट्ठे वर्क प्लेस पे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स का ओपिनियन और कॉन्सेप्ट होता है डेंटल स्टूडेंट्स के बारे में, वो डेफिनेटली मॉडिफाई होता है और वाइस वर्सा. जिस तरह मैंने वो पहले एग्जांपल दी केस स्टडी 4 की, के शुरू में मेडिकल स्टूडेंट्स समझते थे कि फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंफीरियर है, इसलिए कि मेडिकल स्टूडेंट्स डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दोज पीपल आर डूइंग. और अगर हम उनको देखें तो वो कोई मेडिकल प्रोफेशन से कम सर्विसेज नहीं कर रहे. दे आर प्रोबब्ली हेल्पिंग पेशेंट्स in some ways better than the medical profession is helping. So ये एक modification जो opinion में है एक दूसरे के बारे में, mean this is knowing about each other and respecting each other's role. The hallmark of IP is the type of cognitive and behavioral change. यही मैं जो इसको further जो modification हो रही है उनकी thinking में, that would ultimately lead to change in behavior. जब ये students graduate करेंगे तो उनका behavior towards each other, the understanding towards each other would be lot better. और जब वो refer करेंगे तो उनको exactly पता होगा कि हम किस चीज के लिए refer कर रहे हैं, what is the service we want to achieve or what help we want to achieve by referring this patient to a particular specialty. So लेकिन इन सब के लिए अगर आप देखें तो ये जो जब ये स्टूडेंट्स को हमने अगर इकट्ठे लाना है तो उससे पहले उनकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि ये हम इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन प्रॉब्ली फर्स्ट ईयर में शुरू नहीं कर सकते. मे बी हम शुरू करें क्लिनिकल ईयर से, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट द इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स डिफरेंट डिसिप्लिन से आ रहे हैं उनको अपने जो डिसिप्लिन है उसके बेसिक नॉलेज और स्किल्स के बारे में उनका नॉलेज रीजनेबल होना चाहिए. ये एक प्री रिक्विजिट है इसका इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन का, क्योंकि अगर हम दोनों या 3 डिपार्टमेंट्स को साथ ले आते हैं बिफोर दे नो देयर ओन डिसिप्लिन वेल, दैट मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल. सो ये एक समझ लें कि इसमें 3 कंडीशंस. राइट, सो इसमें आई होप द मैसेज of regarding the concept of IPE has been conveyed. Any comments, question आप में से किसी की तरफ से? Before we go to this कि हमें इसकी really जरूरत क्यों है? सर आपने कहा था कि इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन वर्क प्लेस में होती है. इसका मतलब है कि जैसे अगर हम मेडिकल एजुकेशन में देखें तो सिर्फ वार्ड्स या क्लिनिक्स में हो सकती है, आप अंडर ग्रेजुएट्स को जैसे क्लासेस वगैरह में नहीं सिखा सकते, वो इंटरप्रोफेशनल नहीं है. जी नहीं, देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि
फर्ज करें फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनको बेसिक फार्मेसी का पता नहीं होगा, वो अगर आपके साथ आके वार्ड राउंड्स ज्वाइन करते हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट्स को वार्ड राउंड ज्वाइन करवा रहे हैं, और अगर उनको अपनी बेसिक्स का ही नहीं पता, तो ना तो वो सीख सकेंगे, ना वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो इसलिए उनका बेसिक मे बी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब उनको कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उस वक्त आप एक कंबाइंड फॉर एग्जांपल वार्ड राउंड लेते हैं। और जब आप ये लेंगे तो ऑब्वियसली अब आपको दोनों को एड्रेस करना है। अगर आप लेट्स से मेडिकल वार्ड में वो हैं, तो आप सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं करेंगे, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने कंटेंट में, अपने डिस्कशन में, अपने क्वेश्चंस में, जिसमें फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह फार्मेसी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो फार्मेसी में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ड्रग्स कैसे डिस्पेंस हो रही हैं, वहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो पेशेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं। तो ये भी उसी वक्त मुमकिन होगा जब उनको पहले से कुछ नॉलेज होगा कि क्या डिजीजेस हैं, क्या मेडिसिन दी जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो इसलिए उनका बेसिक जो थोड़ा बहुत है वो होना चाहिए। और ये वर्क प्लेस पे इसलिए कि सिंपली ये वर्क प्लेस होगा इन एडिशन टू इफ पॉसिबल कि उनकी कोई कॉमन क्लासेस हो। खाली कॉमन क्लासेस जो हैं वो पर्पस सर्व नहीं करेंगे। जी सर। राइट, एनी अदर कमेंट्स, क्वेश्चंस? राइट, now why we need interprofessional education? I think we have to some extent addressed that question already. As you know, most of our institutions at the moment are following a uni-professional model, and it has been shown to potentially limit the ability to prepare graduates with the knowledge, skills, or attitudes needed for IP collaboration. के जो हमारा प्रेजेंट मॉडल है यूनी प्रोफेशनल, ये लिमिट कर देता है हमारी कोलैबोरेशन जो है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, जिसकी हमने बहुत सी एग्जांपल्स अभी दी हैं कि चूंकि हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल आइसोलेशन में हुई है एज मेडिकल स्टूडेंट, फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग आइसोलेशन में हुई है, और या स्पीच थेरेपिस्ट की आइसोलेशन में हुई है, तो ये हमारी कैपेबिलिटी जो है पेशेंट केयर की उसको लिमिट कर देती है। तो ये एक वजह है कि हमें यूनी प्रोफेशनल से इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ मूव करना चाहिए। Interprofessional teams enhance the quality of patient care, number one, lower costs, number two, decrease patient's length of stay, three, and reduce medical error, four. ये इस पेपर में 4 जो हैं इसके मेजर बेनिफिट्स बताए गए हैं कि lower costs, decrease patient's length in the hospital, stay in the hospital, reduce medical errors, and enhance the quality of patient care. मेरे अपने साथ there are number of examples. तो मैंने फर्ज करें कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने की कोशिश की है, और साथ अगर फार्मेसी वाले हैं तो they will really guide me about the proper dosage और किस तरह से उसको जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक हैं जो जिस तरह मैं उसको BD प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन वो हमें बताएंगे कि आप सिंगल डोज में भी यही एंटीबायोटिक दे सकते हैं विद द डिफरेंट डोज, और इस तरह से पेशेंट का जो कंप्लायंस है वो बेहतर हो जाएगा। So definitely there's no doubt in my mind, in my own practice, ये जो interprofessional practice है IPP, that is really helpful for the betterment of the patient.
Several studies have shown the positive effect of interprofessional education on patient care and safety. The knowledge of what other professions can offer for your patient can, in certain situations, would definitely help. Okay, welfare वाले डिपार्टमेंट वाले क्या ऑफर कर सकते हैं? हमारे पास एक पेशेंट है, उसके उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है या सोशल सर्विसेज की जरूरत है. So unless we know कि क्या सर्विसेज अवेलेबल, और उससे ज्यादा ये कि अगर आप किसी को जानते हैं उसमें, मे बी कोई एक स्टूडेंट था जो इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन में आपके साथ था, अब वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, तो यू कैन सी द हाउ बिग डिफरेंस दैट कैन मेक कि आप उसको एक कॉल करें कि भाई ये मैं एक पेशेंट आपकी तरफ भेज रहा हूँ, तो इसको ये जरूरत है, एंड हाउ मच दैट can change the overall picture for the benefit of that patient. So क्योंकि when we are learning together, so उसमें सिर्फ professionals contacts नहीं रहते, उसमें friendship और acquaintances भी आ जाती हैं जो definitely patient care को improve करने के लिए utilize की जा सकती हैं. It reduced the gap from laboratory to patient bedside medicine. Or proper collection and labeling of specimens, definitely. At least मैं अपने level पे कह सकता हूँ कि मुझे कोई proper अंदाजा नहीं था कि कितनी importance है एक form fill करने की, जो आप laboratory में भेज रहे हैं, उसमें हम स्कैंटी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, उसको प्रॉपरली लेबल नहीं करते, और उससे फिर लेबोरेटरी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है कि पेशेंट सफर करता है, रिजल्ट्स टाइम पे वापस नहीं आते, प्रॉपरली नहीं आते, और पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो इफेक्ट होती है. और स्पेशली जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं या कॉम्प्लेक्स डिजीजेज हैं, उसमें ये जो है, जो हम प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं, उसमें टीम बेस्ड केयर इज वेरी वेरी इफेक्टिव. यहाँ पे ये एक एग्जांपल अगर हम लें कि एक बच्चा है विद cerebral palsy, right? We know that the management of this kind of patients, they need a number of specialties. इसको coordinate pediatricians करेंगे, but we would need physiotherapy, we would need speech therapy, we would need orthopedic surgeons, we would need the eye sport or ENT sport, social sport. So number of departments are involved in the management of these patients. इस वक्त इसकी most of the places जो है वो multidisciplinary approach हो रही है. इसमें let's just think about, maybe just 1 minute, think about कि आप एक पेपर पे लिखें कि अगर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से इसको इंटरप्रोफेशनल प्रैक्टिस में बदलें तो क्या चेंजेस आएंगे. रिमेंबर, एक साइड पे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें नंबर ऑफ स्पेशलिटीज आर इन्वॉल्व, और पेशेंट जो है हर एक डिसिप्लिन के पास जा रहा है और वहां से ट्रीटमेंट ले रहा है. और इसको अगर हम आईपीपी में बदल दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा. जस्ट राइट फ्यू पॉइंट्स जो है इस 1-2 मिनट में, और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. आप में से कोई भी जो है वो अपने जो पॉइंट्स है वो शेयर कर सकते हैं once you are ready. डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सर, आप कुछ शेयर करेंगे? What do you think
क्या चेंजेस आएंगी? मैं अभी बोल देता हूँ, वैसे मैं लिख रहा था। जी जो जी सबसे पहली चेंज जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि हमें पेशेंट्स को रेफरल की जरूरत कम पड़ेगी ताकि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में पेशेंट को भेजें। दिस वुड जी बी ए बिग बेनिफिट। पेशेंट का टाइम बचेगा, लॉजिस्टिक्स में कमी आएगी और आपके डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो डिपार्टमेंट में ही उधर ही रह जाएंगे। और एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, बहुत सारी ओपिनियंस हैं जिसके लिए आपको पेशेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं भेजना पड़ेगा, आपको स्पॉट ऑन वहीं पे, अगर आपके साथ आपके कोलीग्स डिफरेंट डिसिप्लिन के मौजूद हैं, लाइक फिजियोथेरापी हो गई या फार्मासिस्ट हैं या बाकी लोग अगर मौजूद हैं आपके, लाइक कोई रिहैब के लोग मौजूद हैं, डीपीटी के लोग हैं, तो आप स्पॉट ऑन, आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है वहीं पे आप डिस्कस करके दे कैन गिव देयर ओपिनियन, और अगर फर्दर उन्हें किसी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में रेफर करने की जरूरत है दे कैन बी सेंट देयर। इसके अलावा आपकी ड्रग्स की कॉस्ट है सर, जी इट कैन ग्रेटली रिड्यूस द अननेसेसरी मेडिकेशंस। जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस हैं बहुत सारी, जिसमें सबसे कॉमन जो है एंटीबायोटिक्स हैं, वो हम उसमें कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली, हम जो ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स हैं विच लीड्स टू अननेसेसरी रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये जो ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है, हम उसको बहुत सारा रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पॉट ऑन मौके पे फार्मासिस्ट मौजूद है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी का अगर कोई है तो उसकी हेल्प हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है सर। राइट। It can also lead to the reduced number of dosage which is required for for our prescriptions. पेशेंट की सेफ्टी काफी है सर, बहुत सारी। पेशेंट कैन बी सेफ, उसमें हम उन्हें, जरूरी नहीं है कि पेशेंट्स को हम जो है, जो कोई डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, 4 लोग अगर मिलके लेते हैं, अगर फिजिशियन की बजाय या सर्जन की बजाय वही डिसीजन आपके साथ बाकी अलाइड हेल्थ वाले लोग मौजूद हैं, हु कैन गिव देयर इनपुट, तो हम कई अननेसेसरी प्रोसीजर से बच सकते हैं। एक्सीलेंट सर, आपने इतना अच्छा इसको डिस्क्राइब किया। एंड आप ये देखें कि कितने बेशुमार बेनिफिट्स हैं, और आप पेशेंट की तरफ देखें। अगर पेशेंट को हर क्लिनिक में एक डिफरेंट डेज में जाना पड़े, तो जिसके घर में ये खुदा न खास्ता ऐसा कोई एक बच्चा है, उनकी जिंदगी तो घर और अस्पताल के दरमियान में रह जाएगी। सर प्रैक्टिकली तो यही होता है। बहुत सारी अननेसेसरी जो विजिट्स हैं वो शायद इसी वजह से होते हैं कि आईपी नहीं है हमारे, ये जो प्रोफेशनल है, जो कम्युनिकेशन है या प्रैक्टिस कंबाइंड है वो नहीं है। इवन पोली क्लिनिक्स जो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे जो आजकल बहुत सारे फैशन में है, जहाँ जाएं वहाँ पे पोली क्लिनिक्स या मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स आपको मिलते हैं। वहाँ लोगों के लिए काफी बेहतर होता है। आपने पेशेंट किसी दूसरी स्पेशलिटी वाले को दिखाना है, आप उधर ही दिखा लेते हैं। ये तो हम सिर्फ डॉक्टर्स की कम्युनिटी की बात करते हैं। अगर मेरे पास वहाँ डेंटिस्ट हो, मेरे पास वहाँ पे बाकी ये पैरामेडिक्स के अलावा ये कोई, अगर मेरे पास टेक्नीशियन होगा हु इज ट्रेन्ड इन फिजियोथेरापी और रिहैब, या कोई फार्मासिस्ट मौजूद है, जैसे कि आजकल किसी मेडिकल स्टोर पे हैं, दे आर देयर टू हेल्प। अगर आप किसी को बुला लें काउंटर पे, लोग आ जाते हैं सर जी, और दे गिव यू लॉट ऑफ गुड एडवाइस रिगार्डिंग मेडिकेशन। फिर सर प्राइस बड़ी रिड्यूस हो जाती है। पेरेंट्स की या पेशेंट के रिलेटिव की जो हैसल है वो तो कम होती ही होती है, उसके साथ सर कॉस्ट बहुत इम्प्रूव करती है। सर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ इसी तरह की एक सिचुएशन थी। एक पेशेंट है जो मोबाइल नहीं है, और उसका घर जो है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, 3rd या 4th फ्लोर पे, और वहां लिफ्ट नहीं है। आप अंदाजा करें कि अगर उसको मल्टीपल विजिट्स होनी है और एवरी डे उसको कोई बंदा उठा के सीढ़ियों से नीचे ले जाए और सीढ़ियों से ऊपर ले जाए, तो यू कैन इमेजिन के वर्ड्स उनके साथ क्या गुजरेगी। तो आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट एक्सीलेंटली कि इसके जो एडवांटेजेस हैं, प्रोफेशनली भी, पेशेंट्स के भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, दे आर ह्यूज।
सर जो बहुत सारी जगहों पे अगर लैब का, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लैब का कलेक्शन सेंटर ही करीब हो तो बहुत दफा ये होता है कि इस किस्म का पेशेंट जो है, जो इवन हमारी होम केयर जो सैम्पलिंग है अगर वो भी नहीं है तो सर काफी सारा फर्क पड़ जाता है लोगों को। That's right. That's right. इवन अननेसेसरी लैब्स बच जाती हैं और अननेसेसरी जो है कॉस्ट, मैंने तो सबसे ज्यादा हैसल जो पेशेंट के लिए होती है, जैसे अभी आपने बताया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, पेशेंट कैन नॉट मूव, बहुत सारी जगहों पे लिफ्ट नहीं होती, पेशेंट थर्ड फ्लोर पे है, इवन सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर भी है, वो आर पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं या हेमीप्लेजिक हैं या ड्यू टू एनी क्रॉनिक इलनेस पेशेंट इज इमोबाइल, आप ला नहीं सकते उन्हें, तो सर वो तो बहुत बड़ी चीजें सेव हो जाती हैं अगर ये लोग पास हों तो। That's right. That's right. Absolutely right. Anybody else want to share their views apart from? I think Dr. Siddiq has explained excellently. Any additional views from anybody? फिर इंटर प्रोफेशनल सेटअप तो फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी सर कह रहे थे कि कोई जॉइंट क्लिनिक है, तो ये तो बहुत कॉस्टली होगा। मल्टी डिसिप्लिन तो हमें कॉस्ट की वजह से हॉस्पिटल को बेटर पड़ता है। मैडम ये कॉस्टली नहीं होगा, ये सिंपली आपको जो शेड्यूल है वो रीअरेंज करना पड़ेगा। फर्ज करें आप ये करते हैं कि जी हर महीने के पहले मंडे को हम जो है सेरिब्रल पाल्सी क्लिनिक रखेंगे, सो वंस अ मंथ, लेकिन उस दिन जो है वो रिलेटेड डिसिप्लिन्स वो सारे वहां इकट्ठे हो जाएंगे। या ये आप करते हैं कि जी वंस अ मंथ हम एपिलेप्सी क्लिनिक रखेंगे। जी ठीक है। हाँ, तो ये जो है सिर्फ एक शेड्यूलिंग की बात है, इट्स नॉट काजिंग एनी एडिशनल जो है। और उसमें ये अगर आप थोड़ा सा फर्दर उस पर काम करें तो अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन पहले से है कि कौन पेशेंट आ रहा है, तो फिर वो पहले से पता होगा कि कौन रिलेटेड लोग हैं, और फिर ये जरूरी नहीं कि सब के सब जो हैं वो आए, जिनकी जरूरत है सिर्फ वही आएंगे। तो इट्स मोर ऑफ शेड्यूलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन है which actually can save a lot of cost. Any other points? Okay, I think that was it's a good explanation experience in this. So let's move on. So students learn together, build friendship and cultivate professional relationship, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अगर आप कोई ऐसा उस दूसरे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा जो प्रोफेशनल है which has been with you in the training, so that makes a lot of difference as well. तो ये वो दूसरा पहला लोगो था, ये भी है कि एक नर्सिंग है, एक फिजियोथेरेपी है, लैब साइंसेस है, पैरामेडिक्स है, मेडिसिन है, so they would work together a lot better if they also learn and practice together. Right now, let's see कि at international level जो है IPE कैसे interprofessional education कैसे implement हो रही है। Worldwide, IPE initiative have progressively been implemented mainly in the developed countries, as usual. So it's being accepted and practiced at the moment more in the developed countries, or more so in undergraduate level than in postgraduate level. In the UK, a number of government policies have advocated the use of interprofessional education. In Canada, actually the Canada has quite advanced in this. The IPE for collaborative patient-centered practice was initiated in the beginning of 21st century.
Interprofessional Education for Collaborative Patient-Centered Practice. ये एक initiative था जो वहाँ लिया गया, and that has played its role very significantly in the training of undergraduate medical students. So intention क्या है? Interprofessional education will lead to interprofessional practice. और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक हैं, स्पेशलाइज्ड डायबिटिक क्लिनिक हैं, सेरिब्रल पाल्सी क्लिनिक हैं, एपिलेप्सी क्लिनिक्स हैं. तो इस तरह से ये will ultimately lead to interprofessional practice with its so many important benefits, and this is the aim of IPE. So IPE prepares a collaborative practice ready health workforce. जब हमने ये अभी जो we have concluded this के interprofessional education ultimately will lead to interprofessional practice, and so the aim of interprofessional education is to prepare a collaborative ready practice ready health workforce. और collaborative practice ready health workforce क्या है? Is someone who has learned how to work in an interprofessional team and is competent to do so. Number two, understands and respects the roles and expertise of health and social care professionals in the context of working. So एक training ऐसी है और दूसरे they really understand and work on that, and understands the contribution that effective IP team working makes to the delivery of safe and high quality care. जिसमें हमने पहले examples दी थी to understand the role of other disciplines, कि वो कहाँ तक और कितनी help कर सकते हैं. अगर मुझे ये पता ही नहीं कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस लेवल तक और कितनी हेल्प कर सकता है, so I may not be sending to the patient to the right place for care. Requirements for the education of allied health professionals state that allied health professionals should be able to work where appropriate in partnership with other professionals, sports staff, service users, and their relatives and carers. Contribute effectively to the work undertaken as a part of multidisciplinary team. Demonstrate effective and appropriate skills in communicating information, advice, instructions, etc. to the colleagues as well as to the service users, their relatives and carers, and understand the need for effective communication throughout the care of the service user. अब ये requirements जो चार हैं ये allied health professionals के लिए, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो ये it really applies to our undergraduate medical students as well. So they should be able to work where in partnership with other professionals, sports staff. They should be able to contribute effectively in the team. वो एक दूसरे का role, they understand the role of each other, appreciate the help of each other. Similarly, or they, of course, you need a very good communication skill to work under these situations. So these are important points. Although at this stage, this is from the AMI guide, and they are mentioning about the allied health professionals. But when I think about it, I really feel that they are required for our medical students as well. So what are the competencies required in interprofessional education? इसमें अगर आप देखें तो let's start with the participants, the students from different disciplines. They must understand the values and ethics
for interprofessional practice. कि आप अगर इंटरप्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो वी मस्ट know the values and ethics, how to communicate, how to respect their views, how to respond to their queries. And then we need to understand the roles and responsibilities जितने भी उसमें लोग collaborative practice में हैं, हर एक का क्या role है, and each one must understand each other's role so that the proper work can be distributed. ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमें ये भी मुश्किल लगता है कि मैं ये मेरा काम है, मैं दूसरे को क्यों कहूँ, whereas in reality the other person may do it better than what I can do. So relinquishing the some work or responsibility makes a big difference. Here, interprofessional communication practices, definitely, as I mentioned earlier, communication is a major skill which is needed, or per interprofessional teamwork and team-based practice, or all these things, the competencies, all these competencies, understanding values, roles and responsibilities, communication, able to work in the team, everything would actually benefit the patient and the patient care output. Here is another example. Let's say this is pre-qualification. It means that this is what we are teaching to the students, and this is the post-qualification. Uska effect kya hoga? If regarding the attitude, we emphasized that the students must appreciate the value of interprofessional collaboration, knowledge and other professional views. So ultimately what is we are expected that once they graduate, they are ready to exchange viewpoints and information, willingness to share or relinquish the responsibility. So ye hamara teaching method hai, or this is what we want to achieve. Similarly, agar aap skills mein jaएं, communicate with learners from other professions, or after they have learned this, they are skilled, then they can collaborate and negotiate effectively with other professionals and agencies. So much so that they can actually improve their own institutions based on this negotiation and collaboration. So attitude, skills, and knowledge for collaboration are basis for interprofessional learning outcomes. I think this is a good example of that. Levels of interprofessional education outcomes. Level 1 में reaction है. First, that you react whether it's a positive or a negative, but react to others, learners' views on the learning experience. Second level pe is the modification of perceptions and attitudes. So you start realizing the contributions by the others and the benefits of that. And finally, you acquire the skills and knowledge to practice or to establish interprofessional collaboration. And the next stage would be change in behavior. So this is a sort of different steps, the gradual development of students over a period of time towards the interprofessional education. Ultimately, the behavior change ho jayega, to फिर it would lead to the change in the organizational practice. जब ऐसे लोग trained होके बाद में organization में आएंगे, तो definitely they will change the structure of the organization. इसमें और finally होगा ये कि जो benefit है वो patients के लिए जाएगा, society के लिए जाएगा, and there would be a lot of savings
for national health program. So ये एक different levels हैं, and जो in other words, we should not expect कि ऐसे जैसे ही हमने इधर IP शुरू की, everything would change. It would take its time, and we can see the change over time, from reaction to modification to acquisition of knowledge to behavioral change, and then the change in the organizational practice. Or finally, we can see the benefits to the patient. Obviously, it would take some time, but once it has started and the process has been set up in place, the things would change towards the better outcome. Scope or spectrum, there are three categories. एक तो ये कि formal, where explicit planning of IPE occurs, and that's what we are aiming. Ultimately, our teaching would formally accept IPE. However, there may be some informal opportunities where IP occurs in the process of another planned activity. So IP उसमें primary वो जो है aim नहीं है, but it occurs. And third is the by chance. So basically, what we are aiming it is to achieve as a formal rather than informal or by chance, the scope. Which professions can be involved? Actually, the number is limitless. Agar aap ye dekhen, this is the new generation project, which was in the University of Southampton and University of Portsmouth, and they implemented this involving 11 professional programs. Not necessarily sab ke sab ek mein ho, but at different groups, different levels, they were able to implement in audiology, medicine, midwifery, nursing, occupational therapy, pharmacy, physiotherapy, etc. So isme they were able to implement, and they have documented the benefits of such practice. अगर आप सिंगापुर में देखें, IPE in 4 healthcare professional programs in National University of Singapore, इसमें ये 4 programs में जो nursing medicine है, school of medicine है, school of pharmacy है, and dentistry है. So in Singapore they have established this interprofessional education among these 4 different disciplines, and they have very interesting model, which I will explain in a short while. Here in Malaysia, the UKM is a National University of Malaysia, and they have identified their learning outcomes to support the interprofessional education. और इसमें अगर आप learning outcome 3 देखें, ability to work collaboratively within a multi-professional team with integrity and enthusiasm, and to assume a leadership role when appropriate, or ability to lead and collaborate with other health professionals in health promotion and disease prevention. 6th, ability to adopt a holistic approach to patient management. 7th, effective communication and social skills. So ये उन्होंने अपने undergraduate program के जो learning outcome identify किए हैं. So they have identified learning outcome in such a way that the institution would have no choice but to implement interprofessional education. A management and science university जिसमें मैं काम करता हूँ, they have this interprofessional education among all these programs, and they have been implementing it
quite successfully since many years. The international conference on IP in इसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं काम करता हूँ, वो the first conference they held in 2019, where they shared their experience with others. Here is another Malaysian university, the Malacca Manipal, and they started this conference, international conference on interprofessional education, practice and care. And the Abi मेरा ख्याल है इस साल अक्टूबर में they would have third international conference on this. So the point I'm trying to mention here is that a lot of work is being done, a lot of effort is taking place because at national level the importance of the concept has been accepted, and ultimately it would help to reduce the health costs, overall health costs at the national level. Now, how long this interprofessional education should take place between the two or more disciplines? IP should not be seen as one-off initiative. So it has to be a planned activity over a certain period of time. Participating in just one IP course is unlikely to be enough for practitioners to work collaboratively throughout their careers. Second point is that start IP sessions at the right level, neither undervaluing nor overestimating participants. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के पास पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, only then you go for IPE. And the third point, to foster effective interprofessional practice, continuity of IPE throughout the professional training and education period and beyond is necessary. I'll show you some examples on this. ये कैसे implement हो रहा है. This is the example from I think Saudi Arabia. Early, mid, and late. The starting at the nursing year 2 or medicine year 2, or this is the first stage where they are being exposed, video scenarios or clinical shadowing, वगैरह. फिर nursing students year 3 or medicine के 3rd and 4th year के students, ये उससे एक step आगे from exposure to immersion, and then to nursing year 4 or medicine 5th and 6th year to the company. So it is going throughout the training. It's not necessarily means that every day it's going on. Maybe they have sessions once in a week or once in 2 weeks or months, but the program is laid down and that is being implemented. Now, how to develop the IPE curriculum? That is another learning outcome for our this session. So first step in developing IPE curriculum is to find out the competencies which are common to all. If we are involving 2 disciplines or 3 disciplines, then first look at their learning outcomes, their competencies, and then find out what are the common competencies among them and what are the unique competencies. For example, physiotherapy के students हैं और medicine के students हैं, so they have some, for example, communication is a common outcome जो है होगा उसमें. So we need to identify the common learning outcomes as well as the unique to each are identified
with the common goal of improved function of healthcare team. So common to all competencies like communication skills, maybe let's say we are injuries to face, shared role of dental surgeons, ENT के साथ, for example, या eye के साथ, or so there are these shared outcomes and there are unique outcomes. For example, there might be some unique learning outcomes for physiotherapy. So at first stage, we identify, we separate the common and the unique, and then is develop a curriculum that effectively meets the learning needs of members of different professions. So ये जब हमने common जो competencies हैं वो identify कर ली हैं, so that part of curriculum should address competency required by all. So that would be the second step. And most effective use of staff time and expertise इसमें we have to identify. And three main questions which need to be answered. What should be the shared content? What should be the teaching learning process and methods and how to assess? So once we have common competencies, then we have to identify the content which should be included in that, how that should be taught and how that should be assessed. So these are the few points which are required if we want to develop an interprofessional education curriculum. And then is once we have identified this, then next would be that who is going to do that. And obviously we need to have some kind of training, जो facilitators and tutors हैं. So those who are teaching this, let's say medical students and physiotherapy students and speech therapist students, so they need a little bit training how to handle these three different specialties. And once they actually the suggesting and the addressing the common competencies, right? And then continuing on that, the steps to develop the curriculum, all the participating departments must be represented. And who needs to be involved in the development process, when they needed, how will they be kept up to date with the progress, and the team may need to issue brief management bulletins at key stages, because everybody is very busy. And it becomes very difficult to bring the people together at one time. So it has to be planned very carefully, and only those should be invited when it is really necessary. And any decisions made should be conveyed to all the stakeholders. And not all the meetings need to be face-to-face. Now we know that online meetings may be held when we are developing this curriculum. And if sometimes it's not possible for everybody to join, but they might be able to join online. So this is the development of IPE curriculum. Then the assessment, the approach to the design of assessment, you need to answer following questions. What aspect of learning from the IP experience do we wish to assess? Second, what assessment tools are appropriate for the learning outcomes? And third, is there constructive alignment between the learning outcomes, the learning process, and the assessment process? Obviously, learning outcomes would guide us what to teach, how to teach, and how to assess, and that is what constructive alignment is. Assessment methods क्या हो सकते हैं? It can be projects, community project, mini project within the institution, completion of shared tasks, planning, executing, for example, a vaccine drive in a community, supervisors' comments, peer assessment, or portfolios,
or self-assessment. These are different assessment tools which can be used in interprofessional education. Now, the next is the feedback. That is very, very important. The way of seeing that how IP is being implemented. Verbal feedback on their IP learning experiences that can help both in assessment as well as in feedback. Individual written assignments that describe and evaluate the process of working together in an IP team. This is basically not assessing the students, but assessing the program itself. And then poster presentations whereby learners collate salient aspects. So different disciplines as students, when they come together, they prepare a common poster and present it. So these are different methods of assessment, both individuals as well as the program itself. Now, how to implement IPE? The few methods: inpatient medical surgical ward rounds we can involve other disciplines. Inpatient nursing rounds, handover, takeover sessions, dental clinics, pharmacy practical sessions, laboratory technicians practical sessions, speech therapy sessions, physiotherapy sessions, and incorporate perspectives of other professions and teaching sessions. कि जब मैं अगर medical students को पढ़ा रहा हूँ, so I should mention what other disciplines can help in the management of this. So based on the disciplines involved, the sessions can be arranged. अब वो जो मैं ये कह रहा था कि सिंगापुर वालों ने एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया. So this is what they call is IP enrichment activities, National University of Singapore. और उसमें ये IP enrichment activity opportunities are optional. ये compulsory नहीं है for participants and are incentivized with a formal letter of recognition for developing such opportunities. So उन्होंने इसको compulsory नहीं किया, लेकिन जो लोग attend करते हैं उन्हें वो एक certificate issue करते हैं और ये certificate later on helps in their promotion and other activities. यहाँ पे जैसे देखें, so ये different core competencies हैं और they keep on organizing these activities around the year. So whenever students are free, they can join. और उनके लिए incentives ये है कि जो lecturers हैं जो ये program organize करते हैं और conduct करते हैं, उनको positive points मिलते हैं और students जो ये attend करते हैं और बाद में जब उनके post graduation के for example admission की बात आती है तो they are given extra points for this. So they have not made it compulsory, but optional. लेकिन उनमें से कुछ जो हैं उन्होंने वो compulsory किए हैं जिनको वो ये core जो subjects कहते हैं और कुछ को उन्होंने optional कर दिया. So it's a combination of compulsory and optional. और जो so compulsory तो सब attend करेंगे, लेकिन जो optional हैं उनके साथ उन्होंने advantages attach कर दिए हैं to incentivize the participants. So core principle इसमें what is called the 3D. It is very nature of IPE that the learning emerges from dialogue, discussion and debate. जब भी कोई सेशन होगा IPE का, उसमें dialogue होगा, उसमें discussion होगी, उसमें debate होगी, different disciplines जो हैं उनके representative उसमें contribute करेंगे. तो
जो भी सेशन है उसमें वी शुड मेक श्योर कि ये 3 Ds जो हैं ये अप्लाई होती हैं. High quality interaction is important. Learner motivation, group balance, informal learning, learning resistance. So ये areas हैं जो इसके successful implementation में we have to work on that. We have to keep the learners motivated. We have to make the groups which are balanced groups, not dominant by one or the other, and the appropriate distribution of responsibilities. Rules of conduct of IPE sessions. Every member is important and equal. Every member has his or her own strengths. Diversity in opinion and experience is a strength. Every member has a right to disagree. Every member is there to learn, open to learn. Learning from each other, learning about each other, and learning with each other. And every member must participate actively. Every member is equally responsible for the success of learning session. So, the participants and the students, they have been given these rules, and they have been explained. This is what is going to happen. Every member is important. No one is more important than the other, and every member is equally responsible for the success of the learning session, so that the appropriate collaboration can take place. I think I have explained this type of interactive learning. जो action based हैं और simulation based हैं, जो collaborative inquiry, problem based learning, इसको मेरा ख्याल है next slide में थोड़ा explain हो जाएगा कि आप methods क्या हैं IPE के. उसमें पहला method है problem based learning. इसको मलेशियन यूनिवर्सिटी ने implement किया है. वो उसको कहते हैं interprofessional problem based learning. So PBL sessions में different जो है discipline से लोग आते हैं. I think that is most useful कि आपने एक problem based learning session conduct किया है और उसमें जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है. ओके, तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सेशंस हैं. उसमें सिनेरियो ऐसा बनाया जाएगा कि जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग हैं उनको उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. नर्सिंग भी कंट्रीब्यूट करेगी, फार्मेसी भी कंट्रीब्यूट करेगी. सो दिस इज वन वेरी यूजफुल मेथड जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. सेकंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, और जो कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें डिफरेंट students from different disciplines can be involved, and based on that the learning would take place. Or team based learning, again the students coming from different disciplines. So problem based learning, project based learning, team based learning. और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया ने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं. A comprehensive healthcare module है where the IP concepts are explained. और फिर उन्होंने ये जो मैं ये कह रहा था IP problem based learning sessions, interprofessional problem based learning sessions. Case based learning is another method, role plays and online discussions, reflection sessions. So ये जब आपने एक curriculum बना लिया है and you want to implement that curriculum, so these are different methods and the assessment we have mentioned a while ago. It has been implemented in different settings. In acute clinical placement, ये एक है इसमें example ये है कि इसमें IP placement in pediatric ward,
within a large teaching hospital in the UK. The placement was developed for 90 senior nursing students and 90 junior nursing medical students. It aimed to enhance students' understanding of one another's roles and responsibilities. During the placement, senior nursing students buddied junior medical students, and this allowed the students opportunities to gain insight. Or per a qualified member of staff provided overall clinical supervision, and the students' ward-based IP learning experience were subsequently discussed. So this is an example कि आप एक acute clinical situation में कैसे implement कर सकते हैं. इसी तरह एक example है जो community में कैसे आप कर सकते हैं कि different students को आप community में place करें. थर्ड एग्जाम्पल ये है कि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल हॉस्पिटल बनाया गया है जिस तरह क्लिनिकल स्किल लैब्स होती हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से उनको बुलाया जाता है. और इसी तरह एक और एक्सपीरियंस हुआ है रेजिडेंशियल आईपी, जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए एक सॉर्ट ऑफ एक जगह पे रख के और उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है. सो दीज आर डिफरेंट मॉडल्स. मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि आई शो यू डिफरेंट मॉडल्स, और फिर आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो है सूटेबल है और आप उसको किस तरह मॉडिफाई करके अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली उसके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट चाहिए, और फैकल्टी डेवलपमेंट का फोकस जो है वो पहले तो कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है फैकल्टी का कि आईपी का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हैं उनसे फेमिलराइज करना है, कम्युनिकेशन एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट. सो जब हम ये implement करना चाहते हैं तो obviously we need to train the faculty, and these are the points which would help to train the faculty in this manner. Right, I think this is going to be last or second last slide. ये एक conceptual framework है और ये एक continuous process है. From parallel practice to collaboration to consultation to coordination and ultimately to interprofessional. So that's how it's going to take place. ये slide मैंने पहले आपको दिखाई कि किस तरह इसको implement किया जा रहा है. You can apply this cycle. जो कोल्ब लर्निंग साइकिल है कि एक कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, फिर हम उस पे सोचते हैं, फिर आप नया उसका कोई हल निकालते हैं और फिर एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. So whenever we want to implement any new program, we have to go through this cycle. With that, I thank you for your attention and the active participation. If there are any questions or comments, we can discuss that. Thank you. Thank you, sir. Anybody has anything to share? Any questions? You think it's possible to implement IPE in your institutions? सर करिकुलम में बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे. अभी तो हमारे करिकुलम वैसे ही डेवलपमेंट की स्टेजेस में है, इतने अच्छे करिकुलम ही नहीं है. ये तो आई थिंक देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी. जब आप डेवलप कर रहे हैं तो शुरू में ही इसको डाल दें बजाय, क्योंकि जब आपके दो डिफरेंट करिकुलम डेवलप हो जाते हैं तो उनको चेंज करना मुश्किल होता है. But if you are in process, so that should be an opportunity. और उसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत से disciplines को involve करें, maybe to begin with 1 or 2. और इसमें बहुत चेंज इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉमन गोल्स क्या है.
और उन कॉमन गोल्स के बेसिस पे आप जो सेशंस हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। आप जिस तरह यहाँ हम जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, आई थिंक वो वंस अ वीक वो सेशन रखते हैं, लेट्स से एवरी फ्राइडे आफ्टरनून, इस तरह से मतलब आप जो है based on the situation you can identify. Dr. Siddiq साहब, sir. सर आई थिंक ये मुमकिन है काफी हद तक, वी कैन डू इट। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में ये मुमकिन है, स्पेशली जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ या डॉक्टर कुरतुल है ना, हम ज्यादातर लोग एक ही इंस्टीट्यूट से हैं। हमारे पास ऑलरेडी डीपीटी के भी लोग हैं, नर्सिंग भी हैं, नर्सेज भी हैं जो बीएससी कर रही हैं, और इसके अलावा एमआईटी के भी स्टूडेंट हैं, बीडीएस भी है। अगर कोई इस सारे डिसिप्लिन में मुझे नहीं नजर आते तो हमारे पास फार्मासिस्ट और कुछ बाकी क्या लें ये ऑप्टोमेट्री वाले या इस तरह ऑडियोमेट्री वाले लोग फिलहाल नहीं है। बट स्टिल जितने डिसिप्लिन मौजूद हैं वी कैन एक्चुअली ट्राई के इस कॉन्सेप्ट को किसी हद तक, नॉट कम्प्लीटली, मगर जितना एक कर सकते हैं वी शुड अप्लाई। और उसमें सर अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये यकीन दिलाएं कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी कुछ बचत होगी, एंड दे वुड, उनका बजट जो है दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस, so I think they would like to see this proposal, especially जब बजट की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी जो है वो हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है हम इस पे गौर करते हैं। सर बजट तो शायद ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे माइट नॉट बी, मतलब एक ना फर्क पड़े, और जो हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है और वो बजट के ऊपर दे आर नॉट वेरी कंसर्न के इवन बढ़ भी जाए ना, अगर इसका आउटकम अच्छा है दे आर वेरी कोऑपरेटिव। बजट इज नो इशू फॉर देम। एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे हमारे बजट का इशू नहीं है सर। that's great. जी सर, अच्छी चीज ये है। मगर सर जो इसका आउटकम है वो आज अगर शुरू करेंगे तो मेरा अर्लीस्ट भी हम इन्हें डेकेड, इसको डेकेड कुछ 10 सालों में देख सकेंगे सर। Yeah, definitely ये जो है everybody has to understand के इसके जो benefits हैं वो overnight नहीं होंगे। Yeah, it's a change, and the change would always takes its time, so benefits would start coming after